Hello. Hello. Yes, sir. सुन पा रहे हैं आप मुझे ठीक से? स्क्रीन आ रहा है? Yes, sir. आपने सीआर सबको इन्फॉर्मेशन दी थी ना, क्लास हो रही है? Yes, sir. यहाँ खाली 34 पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। कल हमने देखा था, जो हमारी क्लास हुई थी यूनिवर्सिटी में, मैंने आपको बताया था व्हाट इज सेपरेबिलिटी, ठीक है ना? और फिर हमने इसके रिलेशन भी देखे थे विद सेकंड काउंटेबिलिटी। मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था कि सेकंड काउंटेबिलिटी implies separability, मतलब every second countable space is a separable space. Converse in general it need not be true. Not every separable space is a second countable space. However, for in the case of metric spaces, the converse is also true. ठीक है ना? That means if you if you have a separable metric space, then that metric space is also second countable. That means you can create a countable base for the metric topology. ठीक? मैं आपको अभी यहाँ इसकी जो सेपरेबिलिटी की जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है ना फॉर मेट्रिक स्पेसेस, वो मैं पहले आपको दिखाऊंगा। इन जनरल यहाँ भी वही है। इन जनरल सेपरेबिलिटी इज नॉट हेरिडिटरी। दैट मीन्स यू मे फाइंड सेपरेबल स्पेसेस विद नॉन सेपरेबल सबस्पेसेस। ठीक है ना? इट कैन बी डन। Basically, you can embed every topological space in a separable space. Every topological space can be embedded in a separable space. Now, not every topological space is separable. So that means we can have an example of a separable space with a non-separable subspace. But in case of metric spaces, separability is hereditary. जो मेरे ख्याल से यहाँ ये लिखना चाहिए था, separability as a hereditary property in metric spaces. It is hereditary, but in metric spaces only. In general, for general topological spaces, separability need not be hereditary. पहले मैं आपको यही दिखाऊंगा। Hereditary आपको पता है, property is said to be hereditary if it gets transferred to subspaces. पहले हम इसे justify करेंगे that every subspace of a separable metric space is itself separable. So आप record करिए as a theorem. Let xd be a separable metric space and a not equal to phi be a subset of x, then a is non-empty, so we can speak about this. We can speak about the subspace. D is a metric on x. A is a part of x, so D will induce a metric on A, and A with that induced metric, उसको हम D sub A से denote करते हैं, is itself a metric space, and this metric space is called the subspace of xd associated with this non-empty set A. यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, if xd is separable, then this subspace is also separable. Is also separable. So, हम इसे थ्रो करेंगे.
हमने कल देखा था every separable metric space is second countable. Now XD is assumed to be separable, so it must be a second countable space also. पहले वही exploit करेंगे since XD is a separable metric space. And since every separable metric space is second countable, it follows XD is second countable. Stop. So it is a second countable space. So that means it must have a countable base for the topology. ठीक, तो मैं अब उसी को टारगेट कर रहा हूँ जो इसकी काउंटेबल बेस होगी. लेट बोल्ड फेस बी बी अ काउंटेबल बेस, क्योंकि एक ऐसी काउंटेबल बेस होगी. Why? Because it's a second countable space. Let bold face B be a countable base for the metric topology on XT. Then, अब अगर आप इसे देखेंगे, ये ध्यान से देखेंगे, bold face B sub A defined by this B intersected with A such that B varies over bold face B. अब समझ रहे क्या करना है आपने? ये जो काउंटेबल बेस है यहाँ, इसके मेंबर्स के इंटरसेक्शंस आपको लेने हैं विद A. A is the underlying set of the subspace जिसको आपने दिखाना है कि it is separable. ठीक है, जो A आप यहाँ देख रहे हैं ना, इसी A का इस्तेमाल करना है आपने, और you have to take intersections of boldface B members with A. अगर आप ऐसा करेंगे, you can easily show that this boldface B sub A, आप guess कर सकते हैं क्या होगी ये? Is base for A. हाँ, it will be base for the metric topology on the subspace. Then this, और ये जो है ना, चूंकि आप boldface B sub A को जनरेट करने के लिए आप, या इसको obtain करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आप boldface B के members का इस्तेमाल कर रहे हैं. Now boldface B is a countable collection, so that means boldface B sub A ये भी countable होगी. तो इसमें ये दो properties होगी. Then this is a countable base for the metric topology on ऐसे लिखिए metric topology in the metric space A with D sub A. Stop. Therefore, now this has a countable base for its topology, so that means it becomes a second countable space. Therefore, A with D sub A is a second countable, और ये metric space भी है, so it's a second countable metric space. Is a second countable space.
Okay? And we know that every second countable space is a separable space, so it's also a separable space. Consequently, A with D sub A is a separable space. ठीक है? By the way, यहाँ से आप एक और चीज भी सीखते हैं, वो ये है कि that every subspace of a second countable space is a second countable space. वो आप इस तरह से actually establish कर सकते हैं. If B is countable base for the parent topology, then B sub A will be countable base for the subspace topology. अगर boldface B countable है तो boldface B sub A भी countable होगा. So that means every subspace of a second countable space is second countable. ये भी आप by the way यहाँ से सीखते हैं. और ये हो गया. बेसिकली आप देखिए हमने कैसे किया इसको. हमने दिखाना कि subspace is separable. मैंने आपको दिखाया subspace is second countable. And second countability means separability. So that means every subspace of a separable metric space is itself separable. तो metric spaces के लिए जो separability है, it is a hereditary property. ठीक है ना? By the way, let me ask you now something. अगर आप इसे देखेंगे, ये आपने देखा होगा जो आपका रियल एनालिसिस का फर्स्ट कोर्स था ना, वहाँ आपने ये चीज आपके टीचर ने उन्होंने आपको ये चीज पढ़ाई होगी. अगर आप इसे लेंगे C01 या CAB for that matter, C01 with sigma from C01 cross C01 into 0 infinity, defined by this sigma of f comma g, where f comma g, they are coming from C01. If we define this sigma like this, supremum mod fx minus dx as x varies over 01. आपको पता है what C01? It is the collection of all possible real valued continuous functions on 01. और अगर आप sigma ऐसे define करेंगे, you can easily see that this sigma is a metric on this C01. So that therefore ऐसे लिखिएगा. Consider C01 with sigma defined by this. Clearly, this is, you can easily verify that this sigma fulfills all the requirements for being a metric. So clearly, C01 together with this sigma, it's a metric space. ठीक. और मैं आपसे कह रहा हूँ कि that it's also a separable space. Now can you justify this, how this is a separable space? आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी वहाँ रियल एनालिसिस के लास्ट यूनिट में, the Weierstrass approximation theorem. Every continuous function can be approximated by a sequence of polynomials uniformly, and therefore it can be approximated by a sequence of polynomials with rational coefficients. Now the collection of polynomials with rational coefficients is a countable collection. So that means this is separable, because the collection of polynomials, all possible polynomials with rational coefficients, is a countable and dense subset of C01 in this metric space. अगर आप इस metric space में देखेंगे ना, जो ये है ना collection of
all possible polynomials with rational coefficients, it's a dense subset of this space. और वो countable भी है, so therefore it is separable. It's a metric space, and ऐसे लिखिएगा. In fact, this C01 with this sigma is a separable space. Because इसका reason ये है, because the collection of all possible polynomials with rational coefficients is countable and dense subset of C01 in the metric space C01 with sigma. In this setting it is also dense. सबसेट तो है ही है, बट डेंसनेस की अगर आप बात करते हैं उसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए. द फ्रेमवर्क इज गिवन बाय दिस. इस मेट्रिक स्पेस में ये इसमें डेंस है, so it's separable. And separability for metric spaces means the second countability, so therefore it is second countable also. C01 with sigma, this is also second countable. ये लिख के रखिएगा. अब अभी हम फिलहाल के लिए हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पैक्टनेस. ठीक है ना. अब उसके लिए मुझे कुछ प्रिलिमिनरीज चाहिए पहले, वो हम पहले देख लेते हैं. पहले कुछ डेफिनेशंस रिकॉर्ड करिए. पहले आप रिकॉर्ड करिए डेफिनेशन ऑफ अ कवरिंग. इसके लिए आपको कवरिंग के लिए आपने को कोई स्ट्रक्चर, कोई टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है. कवरिंग के लिए मैं कह रहा हूँ, this is plain covering, ordinary covering. So let X be a non-empty set and A be a subset of X. A collection, this C sub alpha, as alpha, where alpha varies over some indexing set capital lambda of subsets of X, of this X, is said to be a covering of this A if and only if A is contained in the union of all the members in this collection. That means A is contained in union C alpha, as alpha varies over the indexing set. This is the requirement for a collection of subsets of X to be a covering for a subset of X. It should be contained in the union of the members of that collection. तब जाके आप कहते हैं कि that the collection is a covering for the subset. Covering is always a collection. It's a collection. ठीक है ना. अब इसके बाद आप एक और डेफिनेशन रिकॉर्ड करिए, ओपन कवरिंग. अब ओपन आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए. ये आप खाली टोपोलॉजिकल स्पेसेस के अंदर इसकी बात कर सकते हैं.
ओपन कवरिंग। अब यहाँ खाली नॉन एम्प्टी एक्स से कुछ नहीं होगा, यहाँ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस होनी चाहिए, तो मैं वही कर रहा हूँ। लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, this be a topological space, and A be a subset of X. Then a collection, this O sub alpha, alpha in some indexing set capital lambda, collection this of open sets, जहाँ जो collection के जो members है they are open sets, of open sets in X star in the topological space is said to be the covering, rather is said to be an open covering, is said to be an open covering of this A if and only if A is contained in their union O sub alpha, as alpha varies over the indexing set capital lambda. A is contained in the union means it's covering, और यहाँ जो sets है they are open, so therefore it becomes open covering. So open covering is essentially a covering wherein the covering sets are open. ठीक है ना? ऑर्डिनरी कवरिंग और ओपन कवरिंग में ये फर्क है। अब इसको कवरिंग क्यों कहा जाता है? अगर आप यहाँ ये इसको वेन डायग्राम से देखने की कोशिश करेंगे, ये जो आप कर रहे हैं ना, कह रहे हैं यहाँ ए इज कंटेन्ड इन द यूनियन, अगर आप पहले ए ड्रॉ करेंगे और इसके बाद अगर ये सी अल्फाज को आप ड्रॉ करेंगे, ये ए पूरा छुप जाएगा बिकॉज ए इज कंटेन्ड इन देयर यूनियन। दैट इज द रीजन हम इसे कहते हैं कवरिंग। ठीक है ना? Let's take an example. Let A be a set of natural numbers. ठीक, और इसके बाद आप ये लीजिए, if fancy f be this, fancy f be the collection of open intervals, the endpoints n minus 1 to n plus 1, where n varies over the set of natural numbers. अब अगर आप इसे कहेंगे, if you call this, अगर आप इसे temporarily अगर आप ये open interval को denote करेंगे by O sub n, that means मैं आपसे कह रहा हूँ that O sub n is actually open interval n minus 1, n plus 1, where n is a natural number. So what will be O1? O1 will be 0, open interval 0 to 2. What will be O2? O2 will be open interval 1 to 3. O3 अगर देखा जाए, it will be open interval 2 to 4, and so on. Now if you take union of all these ONs,
मतलब अगर आप ये करते हैं, if you take union, n runs from 1 to infinity, on, what will be this? Zero infinity. This will be 0 infinity. And 0 infinity contains n, the set of natural numbers, which is our a. So that means a is contained in union of ons. What are ons? Ons are actually, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. This can be written as union. N varies over the set of natural numbers. Open interval n minus 1, n plus 1. So कहने का मतलब ये है कि a is contained in the union of members of, because these are the members of fancy F, right? That means this fancy F is an open cover because इसके जो members हैं, they are open intervals. Therefore, fancy F becomes an open covering for this A. ठीक. By the way, let me ask you something. मेरा एक question है आपसे. Can you drop some sets from this fancy F? क्या आप इस fancy F से कुछ sets drop कर सकते हैं? Suppose you drop the first set. इसमें पहला set कौन सा है इस fancy F का? इसका जो पहला member है, अगर ऐसे देखा जाए, n varies over the set of natural numbers. तो पहला member कौन सा होगा इसका? 0 to It will be 0 to 2. और इसके बाद जो नेक्स्ट मेंबर है, दैट विल बी O2, which is 1 to 3. अगर आप पहले मेंबर को ड्रॉप करते हैं, इफ यू ड्रॉप दिस O1, समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब आप ये करते हैं, यू आर रिमूविंग फ्रॉम फैंसी F its first member, which is open interval 0 to 2. ऐसा करने से आपको एक नई कलेक्शन मिलती है, F स्टार. अब इस F स्टार को आप देखिए, it's a collection of open intervals. बट मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप, is this F star a covering for A? जीरो टू टू अब रिमूव हो गया. अब आपने देखना है कि does it cover, does this F star which is obtained by removing 0 to 2, अब ये कवरिंग नहीं है. ठीक है ना? So for this A, there exists as a covering fancy F जिसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते. It cannot be reduced. मतलब you cannot remove any member from this fancy F. If you remove a member from fancy F, it will lose its covering status. ठीक है? So removing elements from a covering is in general not allowed. ठीक? Because if you remove elements from a covering, it may lose its covering status. What about adding or attaching new members? Instead of removing a member, suppose you attach some new members to this fancy F. तो क्या लगता है आपको, ऐसा करने से क्या होगा? If you attach some new open sets to this fancy F, इससे फर्क नहीं पड़ेगा. उससे फर्क नहीं पड़ेगा. कवरिंग स्टेटस जो है उसका वो वैसे का वैसा ही रहेगा. It will remain a covering if you attach some new sets to this fancy F. पर रिमूव करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है. अब इसके बाद एक और एग्जांपल आप लीजिए. अब मैं यहाँ एक्चुअली ना ये जो कंपैक्टनेस की जो डेफिनेशन है उसको अब मोटिवेट करना चाहता हूँ. तो उसके लिए आप ये देखिए, लेट X star be a topological space and
A be a finite subset of X. What is this A? It's a finite subset of X. That means this A is either empty or contains a finite number of points of X. So now if fancy F equal O sub alpha, where alpha varies over some indexing set capital lambda, if this be an open covering, मैं खुद से assume कर रहा हूँ that it's an open covering of A, then पहली चीज जो आप नोटिस यहाँ करेंगे ना वो ये है, there is no control over the cardinality of this fancy F. Fancy F is indexed by this index set capital lambda और इसकी cardinality कुछ भी हो सकती है, so therefore it's an arbitrary collection. There is no control over the cardinality. ठीक है ना? अब यहाँ लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है, जिस चीज को आप कवर कर रहे हैं इट्स अ व्हाट, इट्स अ फाइनाइट सेट. नाउ इफ दैट बी द केस, तो फिर आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं, देन वी कैन फाइंड सम we can find some indexes alpha 1, alpha 2, so on up to alpha k. और ये कहाँ से आते होंगे? They will be coming from lambda, the index set for this fancy F, such that A is contained in union I runs from 1 to k O sub alpha sub I. क्या आप इसे अग्री करते हैं? करते हैं आप इसे अग्री जो मैं आप ये लिख रहा हूँ? Yes, sir. अब मुझे इसको इलेबोरेट करके बता सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सो दैट जो बाकी हमारी स्टूडेंट्स हैं इनके भी जहन में कुछ आए. मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं कौन सी मैसेज आपको दे रहा हूँ जब मैं ये लिखता हूँ वी कैन फाइंड अल्फा 1, अल्फा 2, so on up to alpha k in capital lambda such that A is contained in this union. हम सब कलेक्शन ले सकते हैं जो कि कवरिंग. एग्जैक्टली आप इस फैंसी एफ की एक सब कलेक्शन, और वो जो सब कलेक्शन है दैट विल बी, क्योंकि मैं यहाँ खाली फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिसेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिस कवरिंग फैंसी एफ इट कैन बी रिड्यूस्ड, आप इसे एलिमेंट्स रीड कर सकते हैं एंड यू कैन रिड्यूस इट टू अ फाइनाइट collection, and that finite collection will still remain or will continue to cover A. और ये कोई भी कवरिंग हो सकती थी A की, so that means in this case every covering, so therefore अगर every covering है तो every open covering में भी यही होगा, because open coverings are also coverings. So in this case मैं आपको दिखा रहा हूँ कि that every open covering it can be reduced to a finite subcover. By subcover we mean a sub collection of the covering which is also a covering. If you have a covering और अगर उस covering के अंदर एक sub collection है which is also a covering for the set, then the sub collection is called a sub covering. अगर आप इसको यहाँ starting से देखेंगे ना क्या हो रहा है, initially मैंने fancy F को लिया था as open covering for A, ठीक है ना? That means हालांकि यहाँ ओपननेस का उतना कोई रोल नहीं है, हाँ इसके बाद जो डेफिनेशन आएगी वहाँ ओपननेस मैंडेटरी है. इनिशियली मैंने आपसे ये कहा था
fancy F is a covering for A, so that means A is contained in union O sub alpha. Alpha varies over the indexing set capital lambda. इसका रीजन ये है because fancy F equal O sub alpha. Alpha varies over capital lambda is a covering, an open covering for A. Covering for A means this, A is contained in the union. ठीक है ना? अब नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दैट, ये मैं आपसे, हालांकि मैंने ये इसको इलैबोरेट करके नहीं बताया आपको ये कैसे, बट आई होप आप मुझे फॉलो कर रहे हैं कि ये कैसे होगा. इनफैक्ट आप इसको दिखा भी सकते हैं कि मतलब ये पूरा रिग्रेस आप कर सकते हैं दैट यू कैन फाइंड दीज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के इन लैम्डा, जिसके लिए ये होगा. इसको करने का तरीका ये है बेसिकली, क्योंकि आप पहले ही मान रहे हैं ना कि A इज अ फाइनाइट सेट. सो लेट्स सपोज A इज A1 A2 so on up to AK. ठीक. नाउ A1 को अगर आप लेंगे, it belongs to A, and A यहाँ आप कह रहे हैं कि that it is contained in this union O sub alpha, alpha in capital lambda. अब क्या होगा जरा मुझे बताइए. A1 belongs to the union. अब इसकी consequence क्या होगी? इसकी consequence होगी there exists alpha 1 in capital lambda such that A1 belongs to O sub alpha sub 1. अब यहाँ हमने लिया अभी A1, अगर मैंने यहाँ A2 लिया होता, 1 की जगह अगर मैंने 2 लिया होता, तो यहाँ क्या आता, there would have been alpha 2. So in general अगर आप यहाँ लेंगे AI, तो यहाँ क्या आएगा, alpha sub I in lambda such that A sub alpha sub A sub I, it will be a member of O sub alpha sub I. So that means if AI is a member of this, and this will be true for each I, for I equal to 1, 2, so on up to K. ठीक. अब अगर आप इसे देखेंगे, यूनियन I runs from 1 to K, singleton AI. Now single AI is a member of this set, so singleton AI will be a subset. So therefore this union will be a subset of union O sub alpha sub I as I runs from 1 to K. ठीक. Now what is this? This would be A1, A2, so on up to AK. And what's that? It's A. So A is contained in union I runs from 1 to K O sub alpha, जो मैं यहाँ लिख रहा था. ठीक है ना? अगर आप इस पूरे चीज को ना, इस पूरे डिस्कशन का अगर आप निचोड़ देखेंगे, वो ये है कि दैट इनिशियली वी हैड अ कवरिंग फैंसी F. इस कवरिंग की कार्डिनलिटी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. कार्डिनलिटी इज गवर्नड बाय द इंडेक्स सेट कैपिटल लैम्डा. लेकिन नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इफ A is finite, then you can always extract a finite sub collection from this fancy F. और वो finite sub collection क्या होगी यहाँ पर, अगर आप इसे देखेंगे, if you take fancy F star as the collection of these O sub alpha sub i's, the O sub alpha sub 1, O sub alpha sub 2, so on O sub alpha sub k, right? अगर आप इसे देखेंगे, this is contained in fancy F, है या नहीं? Because ये असल में fancy F के ही members हैं. So this collection is contained in this. अब ये जो है, यहाँ कार्डिनलिटी पर कोई कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल ओवर कार्डिनलिटी. Whereas यहाँ जो है, it's a finite set. और नीचे आप देख रहे हैं कि this also is a covering. So कहने का मतलब ये है कि this covering, जिसकी कार्डिनलिटी पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, it can be reduced to a finite. अब ये इसकी सब कलेक्शन है और एक कवरिंग है, so this becomes a sub cover, a finite sub cover. It is finite plus it's a sub cover. It's a cover, it's a sub collection, means it's a sub cover.
सो इन दिस केस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इफ ए इज अ फाइनाइट सेट, एक्चुअली ये अब हमेशा होगा ये, अगर यहाँ आप कर सकते हो मीन्स आप किसी भी फाइनाइट सेट के साथ कर सकते हैं। तो फॉर अ फाइनाइट सेट every covering can be reduced to a finite subcover। तो इसको आप पहले लिखिए, not just open coverings, you can actually reduce every covering, in particular open coverings को भी आप reduce कर सकते हैं। सब लिखिए आप ऐसा रिमार्क, if A is a finite set, then every covering, and in particular इसमें फिर open coverings भी आएंगे, because open coverings are also coverings, then every covering of A can be reduced to a finite subcover। When I say can be reduced to a finite subcover, it actually means that inside this covering you can find a finite collection which also acts as a cover। मतलब you can extract a finite sub collection from this covering which acts as a cover। Can be reduced to a finite। For finite sets, every covering can be reduced to a finite subcover। और by the way, let me tell you one more thing जो मैं यहाँ, in fact that's trivial। यहाँ जो हमने किया ना वो हमने डिस्कस किया था when A is finite and non-empty। अगर A empty होगा उस केस में क्या करेंगे आप, उसमें केस में आप K कुछ भी ले सकते हैं एसेंशियली, उसमें कोई ये प्रॉब्लम। आप कोई एक एलिमेंट पिक करिए फैंसी F से, कोई भी एलिमेंट पिक करिए फैंसी F से, if A is empty, ठीक, मतलब ऐसा करिए आप, आपका ये फैंसी F है, आप यहाँ से एक O पिक करिए, पिक O in fancy F, और फिर आप इसे देखिए singleton O, it's a member of fancy F, so singleton O will be a subset of fancy F, ठीक। and A चूंकि इस केस में आपका A empty है, so this will be contained in O, so that means this acts as a cover for A because A is contained in O, और ये इसकी सब कलेक्शन है, so this becomes a सब cover। और ये फाइनाइट भी है तो यहाँ भी आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं फाइनाइट। बाय द वे एक चीज आप जो मैंने आपसे नहीं कही बट दैट इज इम्प्लिसिट, वो दिस इज इम्प्लिसिट हियर। कवरिंग्स जो होती है ना, यूजुअली कवरिंग्स आर नॉन एम्पटी। अगर आपका सेट ए नॉन एम्पटी है, इफ ए इज नॉन एम्पटी देन कवरिंग हैज टू बी नॉन एम्पटी। तो अगर आप कोई बिकॉज इफ ए इज एम्पटी तो इट्स नॉट एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन, तो वहां ऐसी एक्चुअली कोई चीज नहीं है फिर डिस्कस करने के लिए। तो अगर आप किसी मीनिंगफुल डिस्कशन में जाना चाहते हैं तो वहां आपका जो ए है जिसे आप कवर करना चाहते हैं वो नॉन एम्पटी होना चाहिए, राइट। और अगर ए नॉन एम्पटी है तो कवरिंग भी नॉन एम्पटी होनी चाहिए, मतलब कलेक्शन जो इसको कवर कर रही है वो भी नॉन एम्पटी होनी चाहिए। तो दैट इज इम्प्लिसिट, खुद समझ सकते हैं। अब हम आते हैं जो कॉन्सेप्ट है ना कॉम्पैक्टनेस का, उस पर हम आते हैं। अभी हमने देखा कि इफ ए इज फाइनाइट then every covering and in particular every open covering can be reduced to a finite subcover। ये जो compact sets है ना, compact sets are actually those sets which behave like finite sets in this manner। मैं कह रहा हूँ which behave like, मैं नहीं कह रहा हूँ they are finite sets, मैं कह रहा हूँ compact sets, loosely speaking, compact sets
are those sets which behave like finite sets in this manner. In this manner means every covering, every open covering of a compact set can be reduced to a finite subcover. ये होगी हमारी ये definition of a compact set. So आप record up करिए. Let X star be a topological space and A be a subset of X. Then this A is said to be compact in topological space X star if and only if every covering, every open covering, if and only if every open covering of A can be reduced to a every open covering of A in X star, मतलब in the topological space. वैसे that is understood. अगर आप open की बात कर रहे हो topology ये है तो it must be open with respect to the topology था. पर लिखने में कोई हर्ज नहीं है तो आप लिखिएगा इसको. In X star can be reduced to a finite subcover. Actually इसको ऐसे लिखना can be reduced to a finite. अब ऐसे लिखिए reduced can be reduced की जगह लिखिए has है. थोड़ा सा ना अजीब लगता है. Every open covering of A in the topological space X star has a finite subcover. तो ये होगी हमारे लिए डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट. हम सेट को कहेंगे कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ. अगर आप ये कर सकते हैं. एवरी ये इंपॉर्टेंट है. एवरी ओपन कवरिंग must have a finite subcover. Must be able to reduce every open covering. सर फाइनाइट जरूरी है? फाइनाइट जरूरी है. हाँ फाइनाइट जरूरी है. This is important. फाइनाइटनेस को आप ड्रॉप नहीं कर सकते. मारो फिर कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा. तो और यही चीज आपने ऊपर फाइनाइट सेट्स में भी देखी थी. इफ ए इज फाइनाइट तो वहां भी आप ये कर सकते हैं. एवरी कवरिंग आप यहाँ हर किसी का नॉट जस्ट ओपन कवरिंग्स आप यहाँ हर एक किसी कवरिंग को रिड्यूस कर सकते हैं टू फाइनाइट सब कवर इफ ए इज फाइनाइट. तो इन पर्टिकुलर ओपन कवरिंग्स को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक. So that means in this sense compact sets behave like finite sets. In mathematics we usually say that compactness is the next best thing after finiteness. अगर finiteness के बाद कोई अच्छी चीज है ना वो वो compactness मानी जाती है. finiteness के बाद अगर कोई अच्छी चीज मानी जाती है वो compactness होती है. आप देखेंगे यूजुअली जो चीजें finite sets के लिए true है ना ऑलमोस्ट वो सारी चीजें कॉम्पैक्ट सेट्स के लिए भी होती है. बिकॉज देयर इज अ सिमिलैरिटी. कॉम्पैक्ट सेट्स बिहेव लाइक फाइनाइट सेट्स इन दिस मैनर. इस तरह से वो बिहेव करते हैं एज फाइनाइट सेट्स. बिकॉज फाइनाइट सेट्स में भी यही प्रॉपर्टी होती है. एवरी ओपन कवरिंग कैन बी रिड्यूस्ड टू अ फाइनाइट सबकवर. और एक चीज जो अब क्लियर है दैट एवरी फाइनाइट सेट इज कॉम्पैक्ट.
needs no elaboration. ये आप खुद भी आप देख सकते हैं कैसे. So आप लिखिएगा, every finite set in X star is a compact set. ठीक. So in particular if this X is finite, अगर ये खुद finite होगा तो इसका हर एक सेट भी finite होगा, so इसका हर एक सेट फिर compact होगा. ठीक है ना. तो वो भी आप देखिए, वो भी आप लिखिए as a remark. If cardinality of X is finite, if it is a finite set, then every subset of X in the logical space X star is ऐसे लिखें, and every subset of X is compact in the logical space X star. है ना. because अगर X ही finite है, अगर parent set ही finite है, if it has finite cardinality, तो every subset will have finite cardinality. So therefore every subset in this case will be compact. For example, if we take this, if we take X as A, B, C, D, ठीक, और let's suppose star is phi X singleton A and A comma B. Let's suppose this is the topology on X. ठीक है. इसके बाद आप इसे देखिए, if A is equal B, C, D, then A is compact. क्यों है compact? Because it's a finite set. Full stop. अब एक चीज जो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे वो ये है, ऑब्जर्व दैट A is neither open nor closed. क्या ये चीज सही है? ना ये ओपन है ना क्लोज्ड है, ना ये टोपोलॉजी के अंदर है ना इसका कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी. एक मिनट, सॉरी, इज क्लोजर. तो इससे बचने के लिए आप यहाँ एक और पॉइंट ऐड करेंगे. कॉम्प्लीमेंट तो शायद इसका सिंगलटन ई होगा. हाँ, यहाँ एक और पॉइंट आप पहले ऐड करिए. अब अगर आप ऐसा करेंगे, इफ यू टेक x as a b c d e, ta as this and a as b c d, ठीक, तो ये ओपन नहीं है बिकॉज ये टोपोलॉजी में नहीं आ रहा है. और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट विल बी a एंड e, वो भी टोपोलॉजी में नहीं है, सो इट्स नीदर ओपन नॉर क्लोज. तो यहाँ से क्या सीखते हैं आप? इन जनरल compactness neither implies openness nor closedness. ये assume करने की गलती नहीं करना है आपको. Compactness in general does not imply closedness. Compactness in general does not imply openness. Because this A is compact, it's neither open nor closed. ठीक है. एक और एग्जांपल, ये मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, कंपैक्ट है या नहीं. Consider R with the usual matrix, sorry, and
Suppose A is the set of natural numbers, then मुझे बताइए what is this A, compact or non-compact? Then A It's no compact. is not compact. क्यों नहीं है compact? इसको justify कर सकते हैं आप? सर इससे पहले हम हाँ एग्जांपल exactly. हमने एक कवरिंग इसकी देखी थी जिसको आप reduce नहीं कर सकते, so it is not compact. ठीक है ना? It's not compact. इसके बाद एक और डेफिनेशन आप देखिए, कंपैक्ट स्पेस। अभी तक हमने जो डेफिनेशंस देखी ना कंपैक्टनेस की, जो डेफिनेशन आपने देखी वहां आपने देखा व्हाट वी मीन बाय कंपैक्टनेस ऑफ अ सबसेट। जस्ट कंपैक्ट सेट, ये कंपैक्ट सेट की डेफिनेशन है। मैं आपको बताऊं व्हाट्स कंपैक्ट स्पेस। ये मैं उतना कुछ ज्यादा नहीं है, आप इनको हमेशा ना एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये डिस्कशन, तो विल मेंटेन डिस्टिंक्शन। हालांकि एज सच इसमें कोई उतना ना ये नहीं है। फिलहाल आप लिखिए compact space. Basically, if A is a compact subset of X and A is non-empty, then the subspace associated with A will be a compact subspace. तो मतलब you can connect these two things. Compact subspace, compact set for non-empty sets में कह रहा हूँ। इन दो को कनेक्ट किया जा सकता है और वो आप खुद भी फिर समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए हम ये डिस्टिंक्शन मेंटेन करेंगे। A compact space, let X star be a topological space या सॉरी ऐसे लिखिए, a topological space। डेफिनेशन ना ऐसे सही नहीं लग रही है, तो इस तरह से आप लिखिए topological space X star is said to be a compact space if and only if X is compact in X star. This is the requirement. For a topological space to be a compact space, the underlying set of the topological space has to be compact. ठीक है? इसके बाद आप एक थियरम रिकॉर्ड करिए। हालांकि इस थियरम को बेहतर तरीके से मोटिवेट किया जा सकता था अगर हमने हीन-बोरेल थियरम को देखा होता, लेकिन अभी हमने वो चीज नहीं देखी है, तो आप मतलब ना जो इसकी जो आइडियल वो मोटिवेशन होती वो हम यहाँ नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको इन अ वे आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा। मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, जो इसकी मोटिवेशन है इस थियरम की, वो सही से नहीं हो पाएगी। इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, लेट X star be a compact space, a compact topological space, and A contained in X be closed in X star.
तो ए जो है ये कोई ऑर्डिनरी सबसेट नहीं है इस एक्स का, इट्स क्लोज्ड सबसेट, इट्स अ क्लोज्ड सबसेट. Then this A is compact and external. That means a closed subset of a compact space is itself compact. कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर अगर आप एक कोई क्लोज्ड सबसेट पिक करते हैं ना, वो भी कॉम्पैक्ट ही होता है. ठीक है, लेट्स प्रूव दिस फर्स्ट. हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है ए इज कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्टनेस के लिए मुझे आपको दिखाना है कि दैट एवरी ओपन कवरिंग ऑफ ए कैन बी रिड्यूस्ड टू अ फाइनाइट सब कवर. ठीक है ना? लेट O sub alpha varying over some indexing set capital lambda be be an open covering, be an open covering of A. ठीक. Then अब अगर आप इसे देखेंगे, आप कह रहे हैं कि इट्स एन ओपन कवरिंग ऑफ ए, तो ए विल बी, अब देखिएगा पहले फिर आप कॉपी करेंगे. ए मैं थोड़ी सी गैप यहाँ डेलिबरेटली छोड़ रहा हूँ. इन द फर्स्ट प्लेस इट विल बी कंटेन्ड इन यूनियन अल्फा वैरिंग ओवर इंडेक्सिंग सेट कैपिटल लैम्डा ओ सब अल्फा. ये होगा या नहीं? Obviously होगा because it's a covering of A. So A will be contained in there, in the union of these sets. Okay. Now if I take A union with A complement, A is contained in the union this, so A union with A complement will be contained in this union with A complement, right? Now what is this? X. This is X. So that means X, which is equal to this, is contained here. Now what is this? It's a union. Union of which sets? These O sub alphas, ये आपको पता है, ये इसके members है, ये open covering है, so these are open. What about this? open. This is also open. क्यों है open? Because A is Be closed. closed. तो ये भी open है. तो यहाँ से क्या देख रहे हैं आप? Therefore, This is an open covering for X. X, yes, it's an open covering. कौन सी है open covering for X? O sub alphas या O sub alpha together with A complement? Together with A complement. Together with A complement. Therefore, this O sub alpha varies over the index set capital lambda union with singleton A complement. अगर आप इसे लेंगे, this is an open covering for X. अब X के बारे में क्या जानते हैं आप? X is compact. X is compact because X has a compact topological space. Compact topological space का मतलब होता है कि underlying set is compact. ये हमने देखी ना अभी definition. Compact space means the underlying set is compact. Now X is compact. This is an open covering for X. तो फिर क्या होगा? Compact sets में क्या होता है? Every covering can be reduced. तो इसको भी आप reduce कर सकते हैं. कर सकते हैं. Now this covering is composed of two things, this and this. ठीक.
अब अगर आप इसको रिड्यूस कर सकते, इट मीन्स कि देयर विल बी सम फाइनाइट सेट्स, सॉरी देयर विल बी सम फाइनाइट Finite नंबर ऑफ collection. सेट्स, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ दिस कलेक्शन, ठीक है ना। अब उन फाइनाइट सेट्स, वो जो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है, उनमें ए कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं अगर ये नहीं है, वी विल अटैच दिस ए कॉम्प्लीमेंट टू दैट। एक चीज तो सर्टेन है, इसका एक फाइनाइट सब कवर होगा, है या नहीं, बिकॉज एक्स इज कॉम्पैक्ट, तो एक फाइनाइट सब कवर होगा इसका। अब उस फाइनाइट सब कवर में ए कॉम्प्लीमेंट एज अ मेंबर हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इफ इट इज नॉट देयर, आप इसको अटैच करिए, उसको आप इस ए कॉम्प्लीमेंट को अटैच करिए टू दैट फाइनाइट सब कवर, अगर ये वहां नहीं है। अब आप एक ही सेट अटैच कर रहे हैं तो फाइनाइटनेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और हमने पहले ही देखा था, कवरिंग्स में आप चीजें अटैच कर सकते हैं, घटा नहीं सकते। अटैच करने से कवरिंग स्टेटस मेंटेन रहता है। सो अगर आप अटैच करेंगे एक कॉम्प्लीमेंट को, इट विल रिमेन फाइनाइट एंड इट विल रिमेन अ कवरिंग। ठीक, तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ यहाँ नीचे। अब मैं से कोई क्वेश्चन पूछ सकता था मुझे कि मैं इस फाइनाइट कलेक्शन में एक कॉम्प्लीमेंट क्यों ले रहा हूँ। मेरा आंसर वहां यहाँ से एक सिंपल आंसर है कि अगर ये नहीं भी है वहां पर, अगर आप इसको लिखें कि भी वहां पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। मैं वही लिखूंगा, सिंस x is compact, we can find alpha 1, alpha 2, so on up to alpha k in the index set capital lambda, such that x will be contained in O sub alpha 1 union O sub alpha 2 union, so on, union O sub alpha sub k union A complement। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, फुल स्टॉप। देयरफॉर अब A को देखिए, A is x intersected with A, क्या ये चीज सही है? And x is contained in this union, so x intersected with A will be contained in O sub alpha sub 1 union O sub alpha sub 2 union, so on, union O sub alpha sub k union A complement। और फिर आप इसका इस पूरे का ले रहा है इंटरसेक्शन विद A complement, और सॉरी इंटरसेक्शन विद A, इंटरसेक्शन, ठीक, ये होगा। अब ये जो इंटरसेक्शन विद A है ना, आप इस A को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज दिस ये इंटरसेक्शन में आ रहा है, सो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस ओवर दिस यूनियन। और अगर आप ऐसा करेंगे, यू विल नोटिस दैट यहाँ एक सेट है A complement, और यहाँ जो फिर सेट आएगा, व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट दिस इंटरसेक्शन ओवर दीज यूनियंस, यू विल गेट A complement इंटरसेक्शन Empty. A, दैट्स एम्प्टी, उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी टू दिस यूनियन। सो दिस इज सेम एज O sub alpha 1 union O sub alpha 2 union, so on, union O sub alpha sub k intersected with A। क्या ये चीज सही है? मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये अब आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक। बिकॉज इंटरसेक्शन विद ए में ये तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, तो आप इसको ड्रॉप भी आप कर सकते हैं। ये फिर से इस चीज को ना एम्फेसाइज करता था कि असल में ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका होना या ना होना इस रिप्रेजेंटेशन में, इट डजंट इम्पैक्ट एनीथिंग, इसका किसी चीज पर इम्पैक्ट नहीं है। इसका होना या ना होना यहाँ पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक।
Now this intersection मैं आपसे कह रहा हूँ this is contained in O sub alpha 1 union O sub alpha 2 union so on union O sub alpha k. क्या ये चीज सही है? Yes, sir. है ना? Because A intersected with B is contained in A. Intersection is part of each set. अब यहाँ एक सेट ये भी है तो इस इंटरसेक्शन में एक सेट है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट में ये सेट. So this intersection will be part of the set in the square brackets means this is contained in this. अगर आप इसे आप समराइज करेंगे क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं A is contained in this. Hence O sub alpha 1, O sub alpha sub 2, so on. O sub alpha sub k. आप देखिए these sets are open. ठीक, और इनका यूनियन A को कंटेन करता है. So this becomes an open covering for A. But these sets are also coming from this set. So that means ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना ये collection, this is a sub collection. It's a sub collection of this collection. और वो भी कवरिंग है नीचे वाले collection, वो finite collection जो अभी हम देख रहे थे. So that means it becomes a finite subcover. अब अगर आप इस पूरे डिस्कशन को समराइज करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो कवरिंग हमने ली थी इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं टू अ फाइनाइट सबकवर. ये हमने आर्बिट्रली ली थी ये कवरिंग. सो मींस एवरी कवरिंग कैन बी रिड्यूस्ड टू अ फाइनाइट सबकवर. Hence this is a finite subcover of A. और ये हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया? It has been extracted from this original cover. O sub alpha varies over the indexing set capital lambda. Stop. Thus A is compact. बस हमने एक कवरिंग पिक करी थी और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उस कवरिंग को आप रिड्यूस कर सकते हैं. अगर आप उस आर्बिट्रली चोजन कवरिंग को रिड्यूस कर सकते हैं फाइनाइट सब कवर, इट मींस आप हर किसी कवरिंग को रिड्यूस कर सकते हैं टू अ फाइनाइट सब कवर. ठीक है ना? दैट मींस कंपैक्टनेस. एवरी कवरिंग कैन बी रिड्यूस्ड टू अ फाइनाइट सब कवर. वही है ना कंपैक्टनेस. सो ए इज कंपैक्ट. तो अब ये आप हमेशा के लिए याद रखेंगे दैट a closed subset of a compact space is a compact set. मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में. 5 मिनट में आ रहा हूँ. मेरा वेट करिए.
कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको इसके रिलेटेड अभी तक जो चीजें हमने देखी? ठीक है, आप एक और थियरम आप रिकॉर्ड करिए। यहाँ मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा बेसिकली जो कंटिन्यूटी है, इट प्रिजर्व्स कंपैक्टनेस। ठीक, आप इसकी मोटिवेशन में आप इस थियरम की जो हम लिखने जा रहे हैं, हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, उसकी मोटिवेशन में आप ऐसे लिखेंगे, कंटिन्यूटी इट प्रिजर्व्स compactness। कंटिन्यूटी कंपैक्टनेस को डिस्टर्ब नहीं करती है, इट प्रिजर्व्स इट। उसको हम प्रिसाइज बनाएंगे, मतलब मैथमेटिकली व्हाट इट मींस, वो हमें ये थियरम बेसिकली बता रही है। व्हाट वी मीन बाय दिस कंटिन्यूटी प्रिजर्व्स कंपैक्टनेस, मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेट x स्टार एंड, या ऐसे करिए x1 star 1 एंड x2 star 2 be two topological spaces. This and this, there are two topological spaces, and f from the topological space x1 star 1 into topological space x2 star 2 be continuous. ये जो मैं यहाँ टोपोलॉजीज को लिख रहा हूँ ना f की, मैं इसका रीजन ये है कि बिकॉज वी नो दैट कंटिन्यूटी जो है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द टोपोलॉजीज। इफ यू चेंज टोपोलॉजीज, कंटिन्यूटी जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। So it's continuous if star 1 is the topology on x1 and star 2 is the topology on x2, तब ये continuous है। Full stop. Now if A in x1 be compact, अगर ये compact है,
sorry, not B, if is compact. If A container in X1 is compact, then आप guess कर सकते क्या होगा? F of F E. of A. F of A, the image of A under F. That means the direct image function associated with F. When evaluated at A, it will return you a compact subset of X2 data. Then this is compact in X2 means continuous mappings जो है ना, they take compact sets to compact sets. They take compact sets to compact sets. इसके लिए अगर आप चाहे तो आप एक पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए. ये मान लीजिए आपकी कोडोमेन स्पेस और यहाँ से मान लीजिए दिस इज कोडोमेन स्पेस. Suppose this is A. F is a mapping from this to this. This is X1. This is X2. अब इस A के corresponding जो यहाँ होगा ना, F of A, अगर A यहाँ compact है, if it is compact here, तो ये जो F of A है ये इस setting में compact होगा. ठीक है? अब proof. हमने क्या दिखाना है? हमने दिखाना है F of A जो है it's compact. By the way, जो है ना, theorem follows trivially if F of A is empty. है या नहीं? हमने दिखाना है कि this is compact if A is compact and F is continuous. अब अगर ये if this F of A if it is empty, then it's trivially compact because empty set is a finite sets are compact. So we may assume that F of A is non-empty. हालांकि मैं इसको अलग से evacuate नहीं करूंगा इस केस को, but ये हम जहन में रख सकते हैं कि that in fact rather without loss of generality we may assume from the मतलब from the beginning also that F of A is non-empty. अब हमें दिखाना है दिस F of A is compact, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी एक ओपन कवरिंग ले रहा हूँ. Let B sub alpha in indexing set capital lambda be an open covering of F of A. By the way, कहाँ होगी ये कवरिंग? ये किस टोपोलॉजिकल स्पेस में होगी? X2. X2. Is an open covering of F of A. Then अब अगर आप इसे देखेंगे, F inverse B sub alpha varies over the indexing set capital lambda. इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं आप मुझे? पहली चीज जो F है it's continuous, so it will pull open sets back to open sets. तो ये sets क्या होंगे? They will be open. इसका रीजन ये है because F is continuous. It will pull open sets back to open sets. They are open. और क्या बता सकते हैं आप मुझे इन सेट्स के बारे में? अगर आप इन सारे सेट्स का यूनियन लेंगे, आपको पता है आपको क्या मिलेगा? चलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद देखेंगे. दिस विल बी एन ओपन कवरिंग फॉर ए. ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, ये आप इजीली देख सकते हैं. देन दिस is an open covering for A
in the topological space x1 tau. अब A के बारे में क्या जानते हैं आप? A के बारे में हमें पता है कि that it is compact. अगर ये compact है तो फिर क्या कर सकते हैं आप? आप सुन रहे हैं मुझे? Since A is compact in topological space x1 tau, it follows we can find alpha 1, alpha 2, so on, sorry, alpha k kaha in the indexing set capital lambda such that A will be contained in union I runs from 1 to k f inverse, rather f raised minus 1, which is the inverse image function associated with f, evaluated at b sub alpha sub I. ये होगा. Reason being A is compact. ठीक. So, consequently f of A अगर आप देखेंगे, A is contained in this, so f of A will be contained in f of the union. 1 to k f raised minus 1 b sub alpha sub I. A. Now this is f of union and this can be written as union of. This is same as union. अब ये union f के बाहर निकाल सकते हैं. I runs from 1 to k f of f raised minus 1 evaluated at b sub alpha sub I. ठीक है, ये आप कर सकते हैं. बिकॉज असल में ये है f of union I varying over some index at capital I b sub I. This is same as union I varies over some indexing set capital I f of b sub I. ये और ये सेम होता है, में कोई फर्क नहीं. You can easily see this. By the way, यहाँ जो है ना, what it means actually, आपने f को evaluate करना है at elements of the at each element of the union. अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप f को evaluate कर रहे हैं at elements of bi, and then you are taking the union. This is one and the same thing. That is the reason this and this they are same. अब ये करिए या ऐसे करिए, एक ही बात है. समझ रहे हैं मेरी बात? ये दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई ये नहीं है. यहाँ आपने f को evaluate करना है at each point of the union of bi's. आप यहाँ क्या कर रहा है? On the other hand, आप f को पहले evaluate कर रहा है at each point of bi, and then you are taking the union. ये एक ही बात है. So this and this they are equal. आप सुन रहे हैं मुझे? आप यही है तो सुनो. आप रेस्पॉन्सिव वहां से कुछ नहीं आ रहा है मुझे. यस सर. दिस एंड दिस दे आर सेम. अब यहाँ देखिए, यूनियन को भूल जाइए आप. ये जो अंदर वाली चीज है इसे देखिए. दे आर नॉट इनवर्सेस ऑफ ईच अदर. दिस इज डायरेक्ट इमेज फंक्शन, दिस इज इनवर्स इमेज फंक्शन, एंड इन जनरल ये एक दूसरे के इनवर्सेस नहीं होते, ये हमें पता है. अब मुझे पता है यहाँ क्या होगा. अब अपने आप से पूछिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर. देखिए पहले आप क्या कर रहे हैं, आप वो एलिमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं जिनकी इमेजेस अंडर f v सब अल्फा I में है. दिस इज यही है ना, f raised minus 1 evaluated at this means you are collecting those points whose image under f is in this set. और फिर क्या कर रहे हैं आप, उन्हीं पॉइंट्स पर f अप्लाई कर रहे हो. ऐसा करने से क्या मिलेगा फिर आपको?
ये भी याद रखेंगे आप, इन जनरल ये होता है f रेज -1 इवेल्युएटेड एट b, और फिर अगर आप इस पर f अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट इमेज फंक्शन, पहले इनवर्स इमेज फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर डायरेक्ट इमेज फंक्शन, अगर आप ऐसा करेंगे यू विल गेट अ सबसेट ऑफ b, एंड दिस इज आल्सो ओबवियस व्हाई, बिकॉज पहले आप वो पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं जिनकी इमेज b में है, और फिर उन्हीं पॉइंट्स पर आप f अप्लाई कर रहे हो, मींस आपको b के पॉइंट्स मिलेंगे, सो देयरफॉर दिस इज अ सबसेट ऑफ b। अब यहाँ क्या मिलेगा आपको, दिस विल बी कंटेन्ड इन, बाहर से यूनियन ऐसे ही रहेगा, आयरन फ्रॉम 1 to k, व्हाट इज दिस, दिस विल बी b sub alpha sub I। अब इसे समराइज करिए क्या हो रहा है, हेंस जो हमने कवरिंग ली थी b sub alpha, alpha varies over the indexing set capital lambda, it can be reduced to a finite subcover, और वो finite subcover क्या होगा, वो finite subcover ये होगा b sub alpha sub I, where I runs from 1 to k, full stop। ठीक, आपने एक कवरिंग ली थी f of a की, और आप देख रहे हैं कि उस कवरिंग को आप रिड्यूस कर सकते हैं, वो कवरिंग आर्बिट्रली सिलेक्ट करी गई थी, तो अगर आप एक आर्बिट्रली चोजन कवरिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, मींस यू कैन रिड्यूस एवरी कवरिंग, so every covering can be reduced to a finite, every open covering, sorry, ठीक, because this is an open cover, right, not every covering, हम open coverings यहाँ बात कर रहे हैं, और compactness के लिए वही चाहिए होता है, open coverings को आप reduce करने चाहिए, तो वो यहाँ हो रहा है, so that means f of a is compact, so thus f of a is compact। ठीक है, it is compact। So continuous image of a compact set is compact, ये अब आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, f of a is compact, इससे बेसिकली हम कौन सी चीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ that continuous image of a compact set is compact, so continuity it preserves compactness, continuity compactness को disturb नहीं करती, so if under some mapping image of a compact set is not compact, वो mapping continuous नहीं हो सकती, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, अगर किसी मैपिंग के तहत किसी कंपैक्ट सेट की इमेज कंपैक्ट नहीं आती है, वो मैपिंग फिर कंटिन्यूअस नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ फिलहाल के लिए आप ये याद रखिएगा, ये लेटर ऑन हम देखेंगे भी जब मैं आपको हीन-बोरेल थ्योरम दिखाऊंगा। हीन-बोरेल theorem says that every closed and bounded subset of R is compact. In fact, every closed and bounded subset of Rn is compact. अब अगर आप इसे देखेंगे I as closure 0 1 by हीन-बोरेल theorem, जो अभी हमने नहीं करी है लेकिन हम करेंगे इसे, this is compact, this is because it is closed and bounded, this is compact in R with user metric, ठीक है, it is compact। Now consider f from this 0 1 आप चाहे तो f from R to R भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, चलिए R to R करते हैं, so that ना ये जो हमारा previous discussion है ये उसके साथ consistent है, and this time around अब इसे देखिए, ये एक interesting mapping है, f from R into R square, मतलब R2, consider this, define it by this rule, f of t
it's going to be R2 means वहाँ जो अगर इमेज R2 में है तो इमेज के दो कंपोनेंट्स होंगे, वहाँ जो एलिमेंट्स है दे आर एक्चुअली टू ट्यूपल्स, दो कंपोनेंट वाले। जो पहला कंपोनेंट होगा इट विल बी कोसाइन ऑफ 2 pi t. This will be the first component, and second component is going to be sine of 2 pi t. So clearly this f is continuous. आप में से मुझे बता सकता है कैसे? Because इसके दोनों components continuous हैं. This as well as this, they are both continuous. ये आपने advanced calculus में ये चीज पढ़ी होगी. This is continuous means the function f is continuous. So it's continuous. Now let me ask you, what is f of 0, 1? If I take ये ना जो हमारा I है, what will be f of I? पहले ये है कि by previous theorem जो अभी हमने करी, by previous theorem, this f of I is compact. Compact तो होगा ही because f is continuous, I is compact, so f of I is compact. अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, as a geometric configuration f of I क्या होगा? बताइए। आपने तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पढ़ी है, एडवांस कैलकुलस भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता है ना, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशंस आप लोगों ने पढ़ी है, तो आप, और ये 12th क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि ये क्या होगा, व्हाट विल बी एफ ऑफ आई एज अ ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे इस एफ ऑफ आई को, मतलब इसके जो सारे पॉइंट्स हैं अगर आप इन्हें प्लॉट करेंगे इन R2, तो वहां से क्या पिक्चर निकल के आएगी? कि यूनिट सर्कल होगा। It will be unit circle with center at origin. ये है ना पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन सर्कल की, cos 2 pi t sin 2 pi t। ठीक है ना? So this is compact means actually this unit circle is compact. अब अगर मैंने यहाँ लिया होता, ये ध्यान से देखेंगे आप, अगर मैंने यहाँ लिया ना, मैंने अभी cos this and sin this, अगर मैंने ऐसे किया होता r times cos of this, r times sin of this, in that case where r is positive, what would be this? It would be a circle with radius r. ये भी compact होगा, so means circles are compact. ठीक, इसी तरह से आप दिखा सकते हैं कि spheres are also compact. मतलब जो सर्कल की जो बाउंड्री है ना, that is a compact set in R2. और वैसे by Heriditary theorem that follows trivially because वो जो बाउंड्री है सर्कल की, उसकी ना, वो जिसको आप circumference कहते हैं, that is closed and bounded. इसी तरह से जो स्फीयर की जो शेल है ना, आउटर शेल, अगर आप उसे देखेंगे, that would also be compact. अब ऐसे भी दिखा सकते हैं, और Heriditary theorem से तो वो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिलहाल हमने अब देखा that continuity it preserves compactness.
इसके बाद हम फिलहाल के लिए, ये तो पहला डोज था आपका कॉम्पैक्टनेस का, कल मैं आपको इसका दूसरा डोज दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे टॉपिक की ओर जाएंगे, तो या पहले कॉम्पैक्टनेस को ही कंप्लीट करेंगे। मेरे ख्याल से अगर आप अभी कनेक्टेडनेस को देखेंगे, इससे क्या होगा कि ये दोनों चीजें आज रात आपके दिमाग में थोड़ी सी ना वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, फिर वो आप कल दूसरे डोज के लिए रेडी होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, सर आज इतना ही करेंगे प्लीज। इसकी रिकॉर्डिंग वहां से हो रही है, ये आप फिर आराम से देख सकते हैं। मेरा भी है ना टाइम कंस्ट्रेंट, देखिए आज ऑफ था, मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ। सर अगर आप कल भी फिर क्लास लेंगे। कल भी मुझे लेनी है क्लास, हमारा काफी चीजें रह रही है ना, कल तो लेनी ही लेनी है, और अभी भी मुझे आपसे कुछ चीजें डिस्कस करनी है, इसीलिए मैं फिलहाल कंपैक्टनेस को थोड़ा सा ना, अब ये हम कल तक छोड़, बिकॉज अब इसके बाद जो चीजें आएंगी वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी, तो अब ऑलरेडी सर अभी कल आप हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे फिर। क्या, सर कल हम फिर एक्स्ट्रा टाइम देंगे। अभी क्या मसला है, सर हमें थोड़ा कुछ काम था। कौन सा काम, मुझे भी बताइए ना। हमें डॉक्टर के पास जाना है, हम ये वहाँ आपको है जाएंगे। कि सबको है? सर नो, हम दो है। अब मैं दो के लिए क्लास की ये को पूरी क्लास को ये तो नहीं कर सकता ना, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब पे, वो आप वहां से देख सकते हैं। सर फिर टाइम नहीं मिल रहा है ना, इसलिए। ये रिकॉर्डिंग हो रही है वहां से यूट्यूब पर, तो आप वहां से ये देख सकते हैं। फिलहाल हम एक और कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, कनेक्टेडनेस, ठीक। आप एक डेफिनेशन लिखिए, कनेक्टेड स्पेसेस। Let X star be a topological space we say this X star topological space is connected. There is a connected space. Say it's a connected space if and only if X cannot be requirement is this: you should not be able to write, or it cannot be written as a union of two. It cannot be written as a union of two non-empty disjoint open sets in X. अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, if you cannot write this X as a union of two non-empty disjoint open sets, then this X, then the topological space is said to be a connected space. ठीक है, तो अच्छे से इसे देख लीजिए। Topological space X star is said to be a connected space if and only if the underlying set X
cannot be written as a union of two non-empty disjoint open sets in X star. इसके नीचे आप एक और डेफिनेशन लिखिए डिस्कनेक्टेड स्पेसेस. Topological space X star is said to be a disconnected space if and only if X star is not a connected space. If it is not a connected space, then we say it's a disconnected space. और not a connected space होने का मतलब क्या होगा? अब देखिए connected space होने का मतलब क्या होता है? Connected space means it cannot be written as union of two non-empty disjoint open sets. और not connected होने का मतलब क्या होगा फिर? We get written as X can be written, right? चलिए इसको आप लिखिए as a remark. If X star is a disconnected space, then तो फिर क्या होगा? Then we can write this X as what? As union. Union of what? Union of two non-empty non-empty disjoint open sets. disjoint open sets. मैं वही लिखूंगा यहाँ नीचे. Then we can write means we can first in the first place find those open sets. मैं पहले वही लिखूंगा. Then we can find non-empty open and disjoint sets U and V such that what? Their union U union V. What will be this? X. X means X can be written as union of U and V. What's U and V? U and V are non-empty, open and disjoint. अब अगर आप इसकी पिक्चर ड्रा करेंगे, ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है. X is union of U and V, where U and V are open, non-empty and disjoint. देखिए, they are open means the boundary will be a dotted. ठीक, बाउंड्री विल बी डॉटेड, राइट. अगर नया आपने इसको ड्रॉ करना है, अगर आपने इसको पिक्टोरियली रिकॉर्ड करना है इस इंफॉर्मेशन को, ठीक, तो देखिए हम हर एक चीज का इस्तेमाल करेंगे. ओपन मींस द बाउंड्री विल बी डॉटेड. नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होगा? नॉन एम्प्टी मींस द सेट्स विल बी विजिबल. यू एंड वी है ना, दे आर नॉन एम्प्टी, सो दे विल बी विजिबल. तो यू कुछ ऐसा होगा, सपोज यू ये है. अब वी कैसा होगा? वी में आपने ख्याल रखना, इट्स नॉन एम्प्टी मींस दिस वी इज आल्सो विजिबल. इट हैज टू बी ओपन एंड इट हैज टू बी डिसजॉइंट फ्रॉम यू. मतलब वी और यू के दरमियान कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो फिर वी जो है ना, वो कुछ ऐसे हो सकते हैं. तो पिक्चर ये हो सकती है. मतलब ये जो चीज है, ये इस चीज को, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं. अगर आपने इसे रिकॉर्ड करना है
पिक्टोरियली तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते, बिकॉज यहाँ हर एक चीज का ख्याल रखा गया है। ओपननेस के लिए हम ये बाउंड्री डॉटेड रख रहे हैं, इन्हें विजिबल आप रख रहे हैं तो मीन्स दे आर नॉन एम्पटी और दे आर डिसजॉइंट। एंड व्हाट अबाउट दिस, देयर यूनियन इज मीन्स दिस विद टुगेदर विद दिस इज एक्स, सो देयर यूनियन इज एक्स। तो एक्स क्या है फिर? एक्स की कैसी शक्ल अब आ रही है? आप यहाँ कह रहे हैं कि दिस यूनियन दिस इज एक्स, सो मीन्स दिस पीस टुगेदर विद दिस पीस इज एक्स। अब कौन सी पिक्चर आ रही है फिर एक्स, इस एक्स की? इट्स अ डिस्कनेक्टेड पिक्चर। एक पोर्शन यहाँ है, एक पोर्शन यहाँ है और बीच में गैप है। दिस जस्टिफाइज द वर्ड डिस्कनेक्टेड। तो मीन्स ये जो डिस्कनेक्टेडनेस की जो हमारी डेफिनेशन है, इट एक्चुअली कैप्चर्स डिस्कनेक्टेडनेस। असल में ये डिस्कनेक्ट, अगर आप इसकी शक्ल देखेंगे वो डिस्कनेक्टेड ही होगी। अगर इस तरह से इसको देखा जाए, इस तरह से इसकी शक्ल डिस्कनेक्टेड आएगी। ठीक है, सो ये इसे जस्टिफाई कर रहे हैं हम। अब आप एक थियरम रिकॉर्ड करिए, दिस विल बी एसेंशियल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कनेक्टेडनेस। ठीक है, let X star be a topological space. Let this be a topological space. Then the following statements are equivalent. मैं कुछ statements लिखने जा रहा हूँ and those statements are going to be equivalent. Statement first, X star is a disconnected space. ठीक, ये है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये होगा, there exist non-empty disjoint open sets U and V. U and V are going to be non-empty, disjoint and open sets such that X is U union V. तो ये दूसरा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 3, मतलब थर्ड स्टेटमेंट वो ये है, there exists a non-constant there exists a non-constant continuous function f, let's use h from the topological space X star into the topological space S with star sub d, where S is the set 0, 1 and star sub d is the discrete topology on S, that means it is the power set of S. These three statements are equivalent.
Statement first is X star is disconnected. Statement second is there exists two non-empty disjoint open sets U and V whose union is X. And statement 3 is this: there exists a non-constant continuous function H from X star into this, where S is 0, 1, set containing only 2 points 0 and 1, and da sub D is the power set of S. That means S is 0, 1 और जो da sub D है it is the discrete topology. It is phi x singleton, sorry, not x, phi s, because यहाँ है ना this topology on S. So phi s singleton 0 and singleton 1. अब अगर आप देखेंगे ना यहाँ statement 1 implies statement 2, it is trivial, है या नहीं? है या नहीं, मुझे बताइए. Yes, sir. By definition. By definition. So 1 implies 2 is trivial. ठीक, मैं आपको दिखाऊंगा 2 implies 3 and 3 implies 1. ये मेरा काम होगा. Proof. Statement 1 implies statement second. This is trivial. Now assume statement second. Statement second assume करने का मतलब है कि there will be two non-empty disjoint open sets U and V whose union is X. हम इसी U और V का इस्तेमाल करेंगे and will define a function. Assume second and define H from X into S by this rule. H of X, it is going to be, देखिए आप यहाँ क्या कह रहे हैं, ऊपर आप assume कर रहे हैं second means X is U union V. So X is U. What's U? It's non-empty open. U और फिर union with V. V भी यही है. It's non-empty open और they are disjoint, तो बीच में मैं gap रख रहा हूँ. So this is X. X is this and this. ठीक है ना? अब अगर आप X में कोई point pick करते, if you pick some X in X, वो little x या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, है ना? इंटरसेक्शन तो कुछ नहीं है, तो या तो वो U में होगा या V में होगा. अगर U में आपका X है, will define H at X as, अगर ये सिनेरियो है, if X is in U, हम फिर H of X डिफाइन करेंगे as 1, और अगर V में है, यहाँ पर इसको हम डिफाइन करेंगे as 0. आप ये स्वैप भी कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर H of X को 0 डिफाइन कर सकते हो और यहाँ पर 1. इसमें ऐसा नहीं है, बस ये ख्याल रखना अगर आप यहाँ 1 ले रहे हैं तो यहाँ 0, और अगर आप यहाँ 0 लेंगे फिर यहाँ 1 लेना. इस तरह से मैं ये फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ नीचे. By this rule, H of X is going to be 1 if X comes from U, and it is going to be 0 if X comes from V. क्योंकि U और V में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, so therefore this H is well defined. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. There is no ambiguity as far as H is concerned, so it's a function. ठीक, define this. Clearly, H is non-constant. मुझे बताइए क्यों? क्योंकि सर x वेरी करने से इसका वैल्यू भी चेंज होता है. एक्चुअली आपने कहना चाहिए U और V दोनों नॉन एम्प्टी. आप सेकंड एज्यूम कर रहे हैं ना. Second means there exist non-empty open sets U and V which are disjoint and whose union is X. So they are non-empty. That means कोई ना कोई point होगा in U और कोई ना कोई point होगा in V. और U points पर value 1 है, means कोई ना कोई value है जहाँ पर value
जहाँ कोई ना कोई पॉइंट होगा जिस पर वैल्यू 1 होगा, और चूंकि v इज नॉन एम्प्टी, इट मीन्स कोई ना कोई पॉइंट होगा इन x जहां पर वैल्यू 0 है। सो ये दोनों वैल्यूज को अटेन करता है, 1 को भी और 0 को भी। सो देयरफॉर इट इज नॉन कांस्टेंट। इसका रीजन असल में है बिकॉज u एंड v आर नॉन एम्प्टी। ये है रीजन इसका। एंड इट मेक्स सेंस, जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, टेक्स वैल्यूज इन s, इट इंडीड टेक्स वैल्यूज इन s बिकॉज इसके दो ही वैल्यूज है, 0 और 1, और s इज 0 1, s इज 0 1, और it's a mapping from x to s, and it is non-constant because u and v are non-empty. मैं आपको दिखाऊंगा कि this is also continuous. Continuity के लिए हमने क्या ensure करना है? It must pull open sets back to open sets. अब जो टोपोलॉजी है S पर, it is star sub d, and what is star sub d? star sub d में ये आता है, ये आता है, और ये आता है, और ये आता है। अगर आप इसकी इनवर्स इमेज देखेंगे इट विल बी 5, अगर इसकी इनवर्स देखेंगे, इनवर्स इमेज देखेंगे, इट विल बी x। तो इसमें हमेशा ओपन ही आता है। अब क्वेश्चन है व्हाट अबाउट दिस एंड दिस? अगर इसकी इनवर्स इमेज देखी जाए, व्हाट विल बी दैट? मतलब अगर आप ये देखेंगे h इनवर्स ऑफ सिंगलटन 0, h inverse of singleton 0 means you have to collect all those points whose image is in singleton 0। सिंगलटन 0 में इमेज होने का मतलब है कि इमेज इज एक्चुअली 0, means you have to collect all those points whose image is 0, और वो कौन से पॉइंट्स हैं? those are डेफिनेशन देखिए h की, V points. v पॉइंट्स। इसी तरह से सिंगलटन 1 की इमेज, प्री इनवर्स इमेज जो है, इट विल बी q। since h raised minus 1 means the inverse image function associated with h evaluated at phi returns phi, h raised minus 1 evaluated at s, यहाँ से आपको x मिलेगा, h raised minus 1 evaluated at singleton 0, this is v, and h raised minus 1 means the inverse image function associated with h evaluated at singleton 1, this would be u। अब यहाँ से क्या डिसाइड आप कर सकते हैं? इट फॉलोज, दीज आर, ये जो है जिन पर आप ये h इनवर्स या इनवर्स इमेज फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, दीज आर ओपन सेट्स इन द कोडोमेन स्पेस, और इनकी जो इनवर्स इमेजेस है they are open in domain space, so that means h pulls open sets back to open sets, so therefore it's continuous, so it follows h is continuous। अब इस h में क्या क्या चीजें हैं? It's continuous, it's non-constant, so therefore you can create a non-constant continuous function from x star into s with star sub d, which is statement 3. Statement 3 वही, there exists this, so second implies 3। therefore second implies 3, statement second implies statement 3, stop। Finally assume 3, statement 3, that would mean there exists a non-constant continuous function h from this to this। बेसिकली आपको पता है ये कैसे होगा? रीजन इज दिस, जो आपने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ यूज करी ना to establish
2 implies 3, statement 2 implies statement 3. ये चीज एस्टैब्लिश करने के लिए जो आपने आर्ग्यूमेंट्स इस्तेमाल करी, दोज आर्ग्यूमेंट्स आर रिवर्सिबल, आप उनको रिवर्स कर सकते हैं, और आप देखेंगे मैं वही करूंगा यहाँ. Assume 3, so assume 3 means there exists a non-constant continuous function. Now if चूंकि there is one, तो मैं ये ले सकता हूँ, if h from x with ta and s with ta sub d, where s is 0, 1 and ta sub d is p of s the power set of s. If this from this to this is a non-constant continuous function, and by the way, जब आप कहते हैं ta sub d is p of x, it means ta sub d is phi s p of s. Sorry, ta sub d is p of s, so it will be phi s singleton 0 and singleton 1, right? अब वापस यहाँ आइए, हम ये assume कर रहे हैं, we are assuming 3, so it would mean there exists a non-constant continuous function from this to this, और मैं एक ऐसा एक फंक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि है एक तो मैं ये कर सकता हूँ, दिस इज परमिसिबल. अब इसके बाद एंड सॉरी, अब ऐसे लिखिए, if this from this is non-constant continuous function, ये एंड काटिए क्योंकि ये ग्रामेटिकली सही नहीं हो रहा है. ऐसे करिए कॉमा, देन अब इसे देखिए, अब u equal h raised minus 1 evaluated at singleton 0, and rather इसको आप ऐसे लिखेंगे, u defined it like this and v define it as h raised minus 1 evaluated at singleton. वहाँ हमने बेसिकली क्या लिया था, हमने u, हालांकि इसका कोई उसके साथ कनेक्शन नहीं है, दीज आर न्यू आर्ग्यूमेंट्स, बट चूंकि मैंने आपसे कहा था कि वो आर्ग्यूमेंट्स रिवर्सिबल है, तो रिवर्स अगर आपने उनको करना है तो आपने u को ऐसे लेना होगा, बिकॉज u पर हमने वहां वैल्यू 1 दिया था, तो विल टेक u एज h इनवर्स at minus sorry, h inverse at 1. So this will be my u and v will be, यहाँ ना बेसिकली उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को रिवर्स कर रहा हूँ, हालांकि ये भी किया जा सकता था, इसमें भी कोई मसला नहीं था, अगर आप u लेते एज h raised minus 1 at 0 और v अगर आप लेते एज h raised minus 1 at 1, ये भी सही है. Then u define it like this and v define it like this. R, what are these? मुझे बताइए. आप assume कर रहे हैं h is continuous, तो अगर ये continuous है, it must pull open sets back to open sets. Singleton 1 is open in the codomain space, so therefore this u must be open in domain space. Similarly, this v is open in domain space, so they are open. They are non-empty also. क्यों? Because h जो है it is non-constant, तो कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां वैल्यू 1 होगा और कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां वैल्यू 0 होगा. सो मींस कोई ना कोई पॉइंट होगा जो u में होगा और कोई ना कोई पॉइंट होगा जो v में होगा. सो दे आर नॉन एम्प्टी आल्सो. ओपन भी है, पहले हमने देखा दे आर ओपन बिकॉज h इज कंटिन्यूअस. दे आर नॉन एम्प्टी आल्सो बिकॉज h इज नॉन कांस्टेंट. दे आर डिसजॉइंट आल्सो बिकॉज h पर सॉरी u पर जो वैल्यू है इट इज 1 और v पर जो वैल्यू है इट्स 0. So they are disjoint also. So they are open, non-empty, disjoint. What about their union? X. It will be X.
then you and we, you define it like this, we define it like this, are non-empty, open, and disjoint sets with the sets in the topological space extra with u union v equal to x. Means x can be written as union of two non-empty open disjoint sets. It can be written, means it's not connected, means it is disconnected. Hence, x star is disconnected. Is a disconnected space. Thus, statement 3, it implies statement first. And so therefore they are all equivalent. Okay? So ये हो गया. 1 implies 2, this follows trivially. 2 implies 3 ये हमने देखा. 3 implies 1 ये भी हमने देखा. So चूंकि ये सर्किट कंप्लीट हो गया, so they are all equivalent. ठीक, तो आप डिस्कनेक्टेडनेस को ऐसे भी कैप्चर कर सकते हैं और ऐसे भी कैप्चर कर सकते हैं, बिकॉज ये 3 स्टेटमेंट्स है और 3 में एक ये भी है डिस्कनेक्टेडनेस. So if a space is disconnected, there always exists as a non-constant continuous function. And if you cannot find a non-constant continuous function h from this to this, the space must be what then? देखिए, if it is disconnected, connected. then you can always find. और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, if you cannot find a non-constant continuous function from this to this, the space has to be. तो connectedness को आप ऐसे भी कैप्चर कर सकते हैं. तो ये हम लिखेंगे और फिर बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे. This is an alternate formulation for connectedness. A topological space x star is connected if and only if there exists no, उसको मोटिव थोड़ा बोल्ड करके लिखिएगा, no, and only if there exists no non-constant continuous function h from x star into s with tau sub t, where s is 0, 1 and tau sub t is the power set of s. Because connected का मतलब, disconnected का मतलब होता है कि there exists at least one non-constant function. So if there is no non-constant function from this to this, non-constant continuous function from this to this, the space has to be connected. वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ. आप connectedness को ऐसे भी establish कर सकते हैं. If you somehow show that there exists no non-constant continuous function h from this to this, then x term must be connected. ये ऊपर वाली थ्योरम से आपको देखने को मिलेगा. चलिए ये ठीक है, आपके लिए ये काफ़ी है. कि मैंने कुछ और भी चीज़ें रखी थी आज के लेक्चर के लिए, लेकिन अब ऑलरेडी
काफ़ी टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे बाकी। ये लेक्चर थोड़ी देर में मैं आपको इसकी लिंक दे रहा हूँ, तो ये फिर आप आराम से देख भी सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा, लेकिन कल के लेक्चर से पहले ही बताइएगा, क्योंकि कल मैं वो क्वेश्चंस नहीं लूँगा, मेरे पास एक्चुअली उतना टाइम नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पहले, उससे पहले मुझे फ़ोन या कोई टेक्स्ट करके ये पूछ सकते हैं, क्लास से पहले या क्लास के बाद में भी। लेकिन क्लास के दौरान अभी हमें वो ना, जो जिस तरह की सर्कमस्टेंसेस है, क्लास के दौरान मैं आपसे क्वेश्चंस नहीं ले सकता। क्लास के बाद और क्लास से पहले आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब अभी क्लास हो गई, तो अगर कोई क्वेश्चन अभी है तो अभी आप पूछ सकते हैं। तो वैसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, उसका आंसर आप ऑनेस्टली दीजिएगा। क्या अभी आप 10-15 मिनट और निकाल सकते हैं इसके लिए? अगर हाँ, तो फिर हम एक और थ्योरम अभी देख लेते हैं। नो सर। चलिए फिर ठीक है, इंशाल्लाह आप कल देखेंगे।